अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुज़फ़्फ़र नाम है मेरा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इत्तेफाक हॉस्पिटल में। फर्स्ट ऑफ ऑल obviously thank you very much for inviting me. Thank you to Dr. Altaf Cheema. Thank you also to Searle who make Wellbit who are sponsoring today's meeting. अच्छा सर, जो टॉपिक है हार्ट फेलियर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट का, पहली थॉट तो जब मुझे ये कहा गया था तो आई थॉट कि बहुत ब्रॉड है. हार्ट फेलियर इज सच अ ब्रॉड टर्म, has so many different classifications, so many different types, and to cover all that in 30 minutes, which I think we should be aiming to do, is obviously a difficult task. So what I decided was that I'll just share a few things about the heart failure with you. Hopefully they'll be of use to you, and then at the end if there are any questions we could always go through them. Already there have been two questions which are very, in fact, quite a good questions already asked. So what I thought we'll start with is, so very first thing is just to say that we are going to discuss chronic heart failure. We are not going to discuss acute heart failure. We are not going to discuss acute ST elevation MI complicating acute pulmonary edema, because that's more to do with management and hospital. We are discussing more the management in the community. And again, before coming to the topic, the reason it's very important is that partnership which needs to exist between the hospital consultants and the community doctors needs to be established and reinforced. People sitting in the community are the one managing the patient, not the one managing people in the hospital. And an ideal setup for the heart failure management would have enough support in the community for the patient, so that they don't actually have to come every couple of weeks to the hospital for their treatment. So the topic is actually very relevant for the community doctors and the general physicians. So what I thought I'll do is just very basics of diagnosis of heart failure, nothing too fancy, because fact is there's a very commonly quoted 80-20 rule which says you achieve 80% of outcomes just by 20% of effort. Applies to pretty much everything, including the basics of the diagnosis of clinical medicine, including that of heart failure. That all you need to do is just keep an open eye and open mind, and then it would start to make a lot of sense. Second part of it, this would be an overview of management of heart failure, especially a brief discussion on ARNI. So what is heart failure? We all use this word, a clinical syndrome. It's not a single pathological diagnosis. This wording is from ESC guidelines. What we actually mean by syndrome is a Greek word which means running together, things happening together. So it means quite a few signs and symptoms which are happening together which define heart failure. But they do not have to have a common etiology. There's no one single cause, there's no one single presentation, but they would have common things, common aspects in their signs and symptoms. And that clearly is what heart failure is. It's not a single diagnosis. In fact, saying that a person has a heart failure is not actually a good way of communicating. It should be followed by some explanation of what caused that heart failure. So it could be a person has a heart failure because of LV systolic dysfunction, which itself is because of ischemic heart disease. It could be a person has a heart failure because of preserved ejection fraction because of diabetes, hypertension. It could be a person has got heart failure because of aortic stenosis. All these are heart failure, but there are different reasons, different causes, different etiologies. And I think much of what we discuss on heart failure somehow seems to come just to this heart failure with reduced ejection fraction, as if everyone would have a reduced ejection fraction. That's not obviously true. We know half of the people with heart failure have preserved ejection fraction. So the key point on this slide is heart failure is a clinical syndrome of signs and symptoms. It does not tell us what the cause is. It does not tell us what the exact treatment of that is going to be. That is why further workup is needed. So before we go any further, heart failure is common and it's deadly. It's a major health problem. A very old slide. In fact, this is a slide which is shown year and year and year and year afterwards, because so this is actually from late 90s, but unfortunately a lot of that is actually still true, especially for the developing countries. And what this slide shows is survival on the left and the months from identification. So 2 years from the diagnosis, 40% people would be dead after the diagnosis of a heart failure.
That's how bad the heart failure was in early 2000s, and in many parts of the world still is. So it's a problem. It's not a problem, again I say that, it's not a problem for the cardiologist alone. It's a problem for the general physicians, it's a problem for the diabetologists, for the hypertension management people, for the nephrologists. Because heart failure, if we are just trying to control heart failure once it has set in, we are already too late. We need to identify people at risk, which is called the stage A of the heart failure, and take actions at that point. And that's where people other than cardiologists become a lot more important. So the first point I made was heart failure is a syndrome of signs and symptoms. It has different causes. Second, obviously already known that the survival in heart failure, unfortunately, is still not good enough. Causes. So I highlighted the two more important causes, the one we actually deal with more commonly. The first one is myocardial systolic dysfunction. Then there is this heart failure with mildly deranged ejection fraction. Then there is this diastolic dysfunction, the one with preserved ejection fraction. So first cause is myocardial failure. Second, obviously valvular, then there is pericardial arrhythmia. So other causes than myocardial causes. But it's important to remember this, because just having a diagnosis of heart failure is usually not enough. And what we would be concentrating, as it happens in the community, as it happens in the hospital, would be more on the heart failure in people with myocardial diseases. So this may seem completely irrelevant at this point, but half of the people with heart failure have a preserved ejection fraction. So how do they actually have a heart failure? And I think it's important just to sort of go through this slide which I've taken from the internet in this picture. So what is heart failure? Heart failure is when the heart cannot do the work it is supposed to do, which is getting all the oxygenated blood in case of left ventricle, getting all the oxygenated blood from the lungs and then pumping it forward. So there is a forward failure and there is a backward failure. Forward failure is when the blood does not reach the kidneys, a low cardiac output situation, a cardiogenic shock. A backward failure, in a way, is when the blood which is actually supposed to come has to now wait longer because the heart is simply not ready, either because it's not relaxing quickly enough, as it happens in diastolic failure, or it hasn't got a good enough systolic function, so there is more blood remaining in the heart at the end of each systole. So in both cases, there will be a backward failure. Backward failure will manifest itself in case of left ventricular failure with a fluid in the lungs, pulmonary edema, shortness of breath. In case of right ventricle with systemic congestion, JVP would be raised, pleural effusion would develop, and pedal edema would develop. So bit of a forward failure, bit of a backward failure. So the thing about heart, the most interesting thing what I find about heart is that it's a very dynamic structure. The way the blood moves inside the heart is not actually decided by the brain for each, and there is a reflex mechanism, I don't ignore that. But fact is, most of that is pressure and time. As there was a very famous movie in which they said, geology is about pressure and time. Heart is all about pressure and time. The way the blood moves is all dependent on a pressure gradient. If that pressure gradient changes, if one part of the heart becomes malfunctioned, the whole system can easily collapse. So what does that actually mean? The mean pressure in the right atrium is 5. For right atrium to push the pressure into right ventricle, to push the blood into right ventricle, the diastolic pressure in the RV has to be less than 5. So that RV pressure is 25 systolic, 0 diastolic. Let's imagine the diastolic pressure in the RV starts to go up. And if it goes above 5, RA cannot push the pressure into the RV. So all it can do is push the pressure back. Now just ignore the rest of it and just look at the LV. LV has a pressure of systolic 120, diastolic 0. It is 0 to allow LA to push the blood into the LV. Now if the LV diastolic pressure, and if someone cannot follow it, you can always ask, because I'm very keen actually for people to understand this, because that will help them understand how the normal EF can still cause a heart failure. So the blood will move from a higher pressure chamber to a lower pressure chamber. LA has a pressure of 8, LV in diastole has a pressure of 0. Blood freely moves around. Now what happens in LV in hypertension, for example, is
LV starts to get hypertrophied, LV diastolic pressure starts to rise up, and once it starts to go above 8, in this particular example, LA cannot push the blood forward. It will find it easier to just push it backwards. So person would start to develop backward failure symptoms, breathlessness, edema, and all those. The only thing LA then can do is enlarge so that it can increase pressure inside so that it can keep pushing forward. And just remember this in mind because I'll be coming back to this in a minute. So, and we all say it's a clinical diagnosis. For the purists who believe in clinical medicine, it will be a blasphemy to suggest that heart failure is anything other than clinical signs and symptoms. But we have, in 21st century, we have to understand, we have to use the labs and imaging judiciously. Symptoms are all well known. Breathlessness, ankle swelling, and fatigue. They are common. The breathlessness could be exertional, but more importantly, the orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea, the PND. The thing to remember about breathlessness, for example, is you can class it on a NYHA score, which I've left out because I think that would make it more complicated. For the orthopnea, we have to remember that anyone who's breathless will feel a bit more breathless lying down. A person with COPD who's obese, if he lies down, he'll become a bit more breathless. Heart failure isn't about, orthopnea is not only about it, it's about a more profound expression of that. That people have to use pillows to keep them propped up. It's not only about that a person with a COPD and some morbid, some obesity, abdominal obesity, and they lie down and become a bit breathless, because that's very commonly mistaken as a sign of orthopnea. Proximal nocturnal dyspnea obviously matters. In terms of signs, there can be signs of the underlying conditions like myocardial infarctions, conditions like vasculitis and all those. But the more relevant for the heart failure, if there is one single sign one should look for, that's JVP. Unfortunately, not very well taught in the medical schools, not in many medical training programs, but the most useful clinical sign is not S3, which is actually the most sensitive and most specific for the heart failure. It's not crackles, it's the JVP. In fact, for most patients with chronic heart failure, they do not have crackles. The reason is that the heart's we believe that is the theory, that the lungs' lymphatic system would keep on draining the fluid out of the lungs, so they do not actually develop mostly any acute pulmonary edema. They would have a large heart on the X-ray, no pulmonary edema, they'll be breathless and fluid overloaded with some 8 or 10 liters. That's how the body is working. JVP would be raised. Pedal edema may or may not be there depending on how long they're in the bed and all that. JVP would be a useful sign in about positive in about 70% of the people. All I suggest about the JVP is one should just develop the habit of looking at the neck. Do not expect that the JVP would shout at you saying it's a JVP. One of the professors in London used to say half of the clinical cardiology is about JVP and diastolic murmurs. Anyone who can pick those, and he used to say it takes him 5 minutes, only 5 minutes to pick a JVP. All we do is 10-second glance and say we can't see a JVP. Unfortunately, it takes a bit of a practice, but the most, if there is one thing I want to say on this, looking at a patient's neck, feeling the warmth and the temperature of their feet. These are the two parts of examination of heart failure which need to be done. JVP in sitting position or reclining? Okay. So JVP, if it is obviously the normal position to look at JVP for the exam purpose is 30 to 45. I do not have a couch in my room. I still look at everyone's JVP, and in fact one of the most useful things, for example, in hospital you can do is if you have a doubt about whether a person has got a JVP or not, it's very simple just to make them lie down, and if you have an electronic bed, just let it come up slightly. And what you see is if it is a JVP, it will be very obvious, and then it starts to become less and less. It changes with the position. So the ideal position to look at JVP is 30 to 45. We all agree with that. But if it is raised in a sitting position, then it's very raised. And one does not really need to quantify. You can always quantify. But the important thing is just to look at the neck. Just to look. And do you see anything? Do you see at least a pulsation? It could be arterial. We take that. But note, just make a note. Is there an arterial pulsation or not? Is there a pulsation? If you see a pulsation, only do two things. Just keep looking at it in observation to see if it changes with respiration or not. And do not, I think
one should not feel less confident if they cannot. Fact is that many of the times, even in cardiology clinics, we are in doubt whether it's a JVP or not. All I suggest is just keep looking at the neck. Look at the respiration. Does it change with the respiration and does it change with the position? That's one thing. And second, phase of respiration, expiration and inspiration. Okay, so it depends again. If there is a okay, so if you, for example, look at JVP in respiration, normally in inspiration it will fall, in expiration it will be prone. But again, in Cosmal it will be opposite of that. Change in respiration happens is more important for JVP than it is for arterial. So the point is, if you see a pulsation, the next question becomes: is this arterial? Is this venous? That's the question now you're trying to answer. And the things which are going to help in that, in observation, is movement with respiration, change in position. So if you make a person lie down, for example, the same pulsation would become very prominent if it is JVP, or may even disappear. If you make them sit up, the JVP may become less prominent. So it changes with position of there are other tricks you can do, but again you can just do the hepatojugular and see if it rises up when you press for about half a minute. The second thing, okay, as I said, I do not believe too much in pulmonary crackles. I do not believe too much in pulmonary in the pedal edema unless it's massive. Bit of a pulmonary edema, mild swelling on the legs is very non-sensitive, very non-specific. A JVP is a lot more. And in terms of investigations, we'll discuss that. We'll keep moving. So how do you make a diagnosis? Again, the first point is actually the most important. We want to take common sense out of medicine, and that's not the way it should happen. What I mean by common sense is, there is possibly lots of examples of this. You guys have not checked my credentials. You have believed someone saying cardiologist because I sound like a cardiologist. That's common sense understanding of how things are done. When I say common sense, what I mean is this first word of pre-test probability. Before we take a history, before we do an examination, before we order an investigation, we need to have some idea in our mind how likely the diagnosis is which we are going to question. If I see a 20-year-old who complains of orthopnea, how likely it is it will turn out to be heart failure? Compare that, how likely it is that a person who's 70-year-old has diabetes, hypertension, CKD, 3 weeks ago has had a large LV dysfunction, a large ST elevation MI and that LV dysfunction. The pre-test probability in both these is different. So one has to understand what are the groups in which heart failure happens. Heart failure happens primarily in people above 50. We all have patients in their 15s, 20s, 30s basically who have had heart failure, this all dilated cardiomyopathy. But majority people would be elderly, majority people would have cardiovascular risk factors. That's the pre-test probability. If a pre-test probability is high, even if your findings are not specific, the likelihood that that person would have that disease is higher compared to someone whose pre-test probability is lower. The whole cardiology basically works on that in terms of how we investigate. So just keep in mind the pre-test probability. Do you actually expect this person to have a heart failure? Symptoms and signs we have briefly mentioned, we won't go through that. ECG I'll again mention, chest x-ray and BNP and echo. These are the 6 things which should help you make the diagnosis of heart failure in pretty much all conditions. There will always be exceptions, but the rule is these 6 things, and very brief understanding, very basic understanding of these 6 things would take you to the diagnosis of heart failure with lot of certainty. So understand the pre-test probability, understand the symptoms and signs, and a very brief look at the ECG. We are not expecting that one should be able to come up with a definite diagnosis of what the ECG shows. What is pre-test probability? Age, possibly gender, because diastolic dysfunction, there was this thought that the common morphology is elderly female with diabetes, hypertension, who is breathless, would have a higher BNP, that's a diastolic dysfunction. Comorbidities and history of MI. These are the primary 3 things you should keep in mind when looking at a person with pre-test probability. It's not good enough to say, as soon as a person says, I'm breathless, one looks at the JVP and then feels bad by not noticing a JVP and saying, well, how do I make a diagnosis of heart failure here?
The first step was one should have looked at the pre-test probability. Then come to this: are the symptoms suggestive of heart failure or not? Symptoms we have already mentioned. We won't go through that. Signs again we won't go through. As I said, all I want to look at is actually JBP. Separately, I do look at people's feet. In fact, I encourage everyone with diagnosis of heart failure to have their feet felt for how warm they are not in cardiogenic shock, and to feel the pulses. So that's, at least in hospital patients, that's mandatory. I don't want, honestly, I don't want our, for example, trainees to listen to the chest and tell us there are bibasal fine crepitation, which somehow everyone seems to notice and everyone seems to ignore the JVP, and they seem to ignore the fact that the person would have cold peripheries. It's very important for all of us, for people with heart failure, when they are unwell, to ensure they are not in cardiogenic shock, and that means their peripheries are not cold and shut down. Okay, so ECG, obviously there can be quite a few things we can discuss about the rate, about the rhythm, whether they have any Q waves, how is the LVH, LVB and poor R wave progression. Again, this can be very confusing. It's a talk in its own right. We could spend 45 minutes, and I wish at some point we would discuss the relevance of the ECG in all this. But what I mean as a basic rule is one should just need to know what a normal ECG looks like. That's all we are asking. What does a normal ECG look like? So what does that mean? What is the normal heart rate on an ECG? What is the normal width of the QRS complex on an ECG? Third, where are normally there are the Q waves? So there are some leads where the Q waves would happen normally. If, for example, you know only these three things: what is the normal heart rate, which is everyone knows, 60 to 100, machine can read it. Second, what is the normal QRS duration? Normal QRS duration is less than 3 small boxes. And third, where are the normal Q waves? The normal Q waves obviously would, in one of the inferior leads, lead 3, and could be in V1 and AVR. Any Q wave other than that is pathological. All I expect is just these three things: rate, QRS duration, and the Q waves. This obviously is oversimplification. For example, if you look at this ECG, we notice that this person's heart rate is faster. We won't go into what the rhythm is. But if we want to look at the heart rate, we say the heart rate is faster because we know that the distance between one big box to the next box is 300. So we know that it's faster. We know that if we start at this big box, going to the next is about 150. So 300 and then 150. So the rate is faster. The second thing we notice on this ECG is that the QRS segment is broader. And so one needs to obviously know where the Q and R and S is, but we know the QRS is broader. Just these two facts would make much more likely that this person with breathlessness could be in heart failure. So again, it's not the time for us to go into too much detail of that, but all I want to emphasize is that the 80-20 rule, majority of it is not about detailed understanding of the ECG. It's only about just understanding what a normal is and then keep moving forward. Don't get stuck at one point. अच्छा सर, क्योंकि इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर, एंड अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन टू जस्ट कम अप एंड से दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. For the purpose of heart failure diagnosis, knowing it's abnormal is enough. But this person obviously has a left bundle branch block, and when I say left bundle branch, I'll just briefly explain now that we've said it. A bundle branch block is when QRS is more than 3 small boxes, which this is. And once it is more than 3 small boxes, all you need to do is, the simplest way of looking at that is, all you need to do is look at the lead V1. इसमें V1, V3 क्या शो कर रही है? नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, क्या शो कर रही है? सर असल में essentially idea ये है कि this is a small R wave, right. Then there are the deeper S waves. So this person has a left bundle branch block, और the reason I say left bundle not right bundle is कि V1 के अंदर टर्मिनल R पॉजिटिव नहीं, कोई पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं है. क्योंकि वहाँ पे नहीं है तो ये बंडल ब्रांच तो 3 बिग स्मॉल बॉक्सेस से बड़ा होने पे बंडल ब्रांच तो बन गया. अब क्वेश्चन है राइट है या लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है क्योंकि इसमें V1 के अंदर कोई पॉजिटिव R वेव नहीं है, टर्मिनल R. So again, we won't go too much in detail of this because that will deviate us, but at some point I think it will be useful just to discuss that. Second, we look at the chest X-ray.
Again, chest X-ray can be confusing and all that. For most patients with chronic heart failure, possibly the simplest answer would be just look at the heart size. Do not go too much into the alveolar congestion, the interstitial edema, the bat wing appearance, the curly D lines, because they can be, if you are not used to looking at X-rays, all you need to do is look at the chest X-ray heart size. How do you look at the cardiomegaly? This again is from internet. So basically you want to see the maximal size of the heart, and that should be less than 0.5 of the cardiothoracic ratio. So the cardiothoracic ratio should be less than 0.5 of the thoracic cavity. So basically you want to look at the maximal width across. And again, that's a very useful sign. Now one has to remember this. A large heart is a useful sign. So it's a good rule-in test. So if you have a larger heart on the X-ray for a patient, it's a good ruling in. It's not a good enough ruling out test. So just because the heart size is smaller, you cannot rule it out that this person has a heart failure. A person could have a heart failure with a smaller heart on the chest X-ray. So a good rule-in test, not a very good rule-out test. And these are the various ways in obviously heart failure the chest X-ray could appear. Okay, so one point about echoes, and again I'll spend few minutes. I don't know whether this is relevant or not, but I do believe that lots of time we get reports without actually fully understanding what that report actually is telling us. So on the echo report you'll find few things. Everyone's eyes would be drawn to ejection fraction, and possibly for the right reason, because ejection fraction is related to the mortality, to the prognosis, to how we treat them. But ejection fraction is one category, and the EF below 35% can be taken as a cutoff of people who are severely impaired and who are not severely impaired. But more importantly, look at the LV, not equally importantly, basically, not more importantly. Equally importantly, look at the LV morphology. Is there a LV hypertrophy? Because LV hypertrophy is telling us something. It is telling that this person possibly has had systolic arterial hypertension. As a result, LV had to hypertrophy. If LV has hypertrophy, what would we expect? Looking at that very first diagram, we would expect that this person's diastolic pressure would be higher because he has a LV she has a LV hypertrophy. So I want that picture to be kept in mind, that if there is a LV hypertrophy that is telling us diastolic pressure is high, something is being transmitted back. Question then becomes, has this person now developed frank heart failure, or is the heart still managing it well? What would I want to look at once I have found a person to have a LV hypertrophy? I would want to look at the LA size. Has the LA started to increase? That again tells us something. If the LA has increased in size, that clearly tells this person's diastolic function is not normal. I do not want to look at whether this diastolic dysfunction grade 1 or grade 2 or grade 3. The simplest way of looking at an echo is look at ejection fraction, look at whether there is LVH or not, and look at LA size. And honestly, other than valves and pericardium, for the heart failure part, you can pretty much stop at that. If you are interested, you can then look at what the Doppler E over E prime ratio is. So that will be the fourth parameter to look at. It is supposed to reflect the LA pressure very well in most situations. And that is how the cardiologist or the sonographer would be reporting the diastolic dysfunction. They'll be looking at E over E prime ratios, E over E ratios, Doppler functions, and the TRVs and all that. From very practical point of view, if a person does not have a dilated LA, one should question whether they really have a diastolic dysfunction or not. It is one of the parameters, but from practical, simplistic point of view, is one of the most important parameter to look at for the diastolic dysfunction. So when you look at echo, look at EF, look at LA size, look at LVH, and just keep that diagram in mind on why these are important. So if I look at that diagram again and I say something else, I say, and let me just go back to it, it may just delay us a little bit. So what I meant by that diagram was this. We are saying that in the LV there is LVH, as a result LA has dilated, as a result person has got pulmonary hypertension, as a result is the TR. This whole thing would start to make sense. So once you look at a person has LVH, dilated LA, tricuspid regurgitation, this may seem very irrelevant to you,
but this could be very relevant because the mind then would understand that what we are looking at is simply a better control of hypertension here and some diuresis. That's all we are going to aim for. There's no fancy tricuspid regurgitation causing problem here. The problem actually is being transmitted back. Okay, so I'll leave that at this point. Again, EF, LA and LVH. Now, BNPs have become very useful and we are thankful they are available. Similar to, for example, previously we used to label lots of ACS as angina, not knowing that they are actually BNP. So brain natriuretic peptide, NP is natriuretic peptides. So these are the, for example, these are the chemicals which are released when the atria are under stretch. So for example, a person has LVH, the pressure in LA is rising. The way the body would work, the heart would cope with that would be releasing the natriuretic peptide. So they are an indicator that the pressure is rising. So they can be useful to diagnose heart failure. In fact, most of the heart failure trials now require a person to have a positive natriuretic peptide. That is neurological test. Blood test. Blood test. So you do basically a blood test. And there are two variants available, a BNP and anti-pro-BNP. For all practical reasons, there is not much difference. So one could just order any of those depending on whatever lab they have got. These are very good rule-out tests, not very good rule-in tests. Rule-out test, if you have a negative BNP, 90% certain this person does not have a heart failure, almost 90%. The exception to that would be morbidly obese people. So if you have someone who is morbidly obese, BNP becomes less reliable. For anyone else, BNP is possibly the most useful test you can ask. It is possibly the most useful test one can ask for in heart failure. Why is it not a very useful rule-in test? The reason is there are other reasons why the BNP could go up. It could go up in CKD, it could go up in atrial fibrillation, it could go up in arrhythmias. Not in ischemic heart disease. If it is not causing a heart failure, then no. If ischemic heart disease is causing a LV dysfunction or is a contributor to diastolic dysfunction, a person is developing heart failure, then it's very useful. A small point again would be to take in account that when we will be mentioning about ARNI, then anti-pro-BNP may not be that useful to follow through. But again, we are discussing making the diagnosis of heart failure. So till that point, BNP is a very useful test. And there are various criteria, older criteria, Boston criteria, Framingham criteria, which look at whether the person has orthopnea and X-ray and all those. But that's where the whole thing about diagnosis finishes. And what I want to do is simply to remind on what we discussed. We discussed that it's a syndrome with lots of various causes. That was one. Second was the diagnosis starts before you ask a person a symptom. So it starts at the pre-test probability. Understand who are the people who get heart failure. It is true that someone may not have diabetes, hypertension, can still have a heart failure, but that's less common compared to someone who has heart disease, diabetes, hypertension. The pre-test probability is important. Second, look at the specific signs and symptoms and do not worry too much into going into details. Same is true about the signs. JVP, recent weight gain, possibly are the most useful things. If someone can pick up a S3, that's very useful. Massive edema could be useful, mild edema isn't. Then look at the ECG. All you need to do is find out if it's an abnormal ECG. Then move to the chest X-ray, a larger heart failure, BNP is raised, your diagnosis is pretty much done. Okay. Actually, sir, even in ischemic heart disease, troponin and CPM, they remain normal. In case of cardiologist, congestive heart failure, BNP, they are raised, no effect on the देखिए ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन मायोकार्डियल नेक्रोसिस का है, ठीक है। ये एक्यूट, यानी अगर किसी को ACS हो रहा है, ST एलिवेशन है। अच्छा देखिए, इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज की पहली प्रेजेंटेशन है साइलेंट। लोगों को हार्ट डिजीज है पता नहीं है, सम ऑफ देम वुड हैव अ सडन कार्डिक डेथ।
इस्कीमिक हार्ट डिजीज की सेकंड प्रेजेंटेशन है स्टेबल एंजाइना। द वर्ड इन स्टेबल एंजाइना इज प्रिडिक्टेबिलिटी। मैं चलता हूँ, मुझे सीने में दर्द होता है, मैं रुकता हूँ, ठीक हो जाता है। मैं डॉक्टर को आके कहता हूँ कि जी आज से पहले तो मैं मॉडल टाउन के 2 चक्कर लगा लेता था, अब जो है 1 चक्कर पे मुझे रुकना पड़ता है। दैट्स अनस्टेबल एंजाइना, यानी एंजाइना वर्सन होता जा रहा है। एंड द मेन, इसलिए प्रिडिक्टेबिलिटी अब खत्म होती जा रही है। पहले ये बड़ा प्रिडिक्टेबल था, 4 किलोमीटर पे जाकर मुझे दर्द होता था, मैं रुकता था, ठीक हो जाता था। अब जब प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो रही है तो स्टेबल एंजाइना खत्म होता जा रहा है, डिजीज वर्सन होती जा रही है, या उसका जो बॉडी का कोप अप मैकेनिज्म था वो खत्म हो जा रहा है। अब अगर इस पेशेंट को बैठे हुए सिम्टम्स हो रहे हैं तो डिजीज अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एंटर हो रही है, यानी अनस्टेबल आ रहा है पेशेंट। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के 3 पार्ट्स हैं। एक है अनस्टेबल एंजाइना, जो अनप्रिडिक्टेबल, लार्जली अनप्रोवोक्ड एंजाइना है। वो कहते हैं जी पहले तो 1 साल तो गुजारा होता रहा, अब तो रात को भी दर्द शुरू हो जाता है। ये एंजाइना अभी इसलिए है, एमआई इसलिए नहीं हुआ कि इसका ट्रोपोनिन नेगेटिव है। प्रॉपर चेक करते हैं, कहते हैं नेगेटिव आ जाते हैं। ऑनेस्टली वी शुड अबंडन सीकेएमबी। दे आर कंफ्यूजिंग, दे ऐड मनी टू द पर्सन, मतलब कॉस्ट टू द पर्सन ट्रीटमेंट, दे डू नॉट ऐड एनी वैल्यू। सिर्फ ट्रोपोनिन करवाएं, ट्रोपोनिन करवाएंगे। अगर वो नेगेटिव है लेकिन हिस्ट्री वर्सनिंग एंजाइना की है तो अनस्टेबल एंजाइना है। ट्रोपोनिन पॉजिटिव है तो पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का अनस्टेबल एंजाइना पार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन या नॉन स्टेमी हो गया या स्टेमी हो गया। अब लुक एट द ईसीजी, अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, स्टेमी हुआ नहीं हुआ तो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है। हार्ट फेलियर में ट्रोपोनिन बढ़ सकता है क्योंकि सारी बॉडी स्ट्रेच में है, लेकिन दैट मे बी कि उस पेशेंट को एसीएस नहीं हुआ। इसको हम लोग टाइप 2 एमआई कहते हैं। एक टाइप 1 एमआई है जो टिपिकल एमआई है, एक टाइप 2 एमआई है जिसको हम डिमांड सप्लाई का मिसमैच कहते हैं, कि यहाँ डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम नहीं हुई, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है। एसेंशियली हार्ट फेलियर में आप ट्रोपोनिन करवा सकते हैं, और अगर मैसिवली रेज हो तो इट मे टेल यू कि इस पेशेंट को असल में एसीएस हुआ था जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हुआ है। बट वी आर टॉकिंग मोर ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में नॉर्मल इजेक्टिव फ्रैक्शन भी है। और फिर इसी में ना क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा ऐड करना था, है थोड़ा खतरनाक सवाल। वो ये, क्या हम इवेंटुअली की गोली खिला के ईटीडी ये कर सकते हैं? इवेंटुअली की गोली खिला के हम वो मॉनिटर पे देख लेंगे क्या। अच्छा सर, हाँ सर, वो ना खतरनाक सवाल है। करें कि ना करें? नहीं कर, इसलिए मैंने पहली दफा ये सुना कि अच्छा आइडिया ख्याल आया बिल्कुल अभी आइडिया इसके बिहाइंड वही है। देखिए जो आप स्ट्रेस दे रहे होते हैं हार्ट को, आइडिया ये कि हार्ट को स्ट्रेस दें, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाएं। जब डिमांड ज्यादा हार्ट करेगा, अगर सप्लाई पूरी नहीं कर रहा तो कोरोनरी आर्टरी में डिजीज होगी। दैट्स द सिंपलिस्टिक व्यू, ठीक है। ईटीटी में यही करते हैं, हार्ट रेट बढ़ा दें, ईसीजी में चेंजेस आएंगे, कहीं सप्लाई नहीं हो रहा, होनी चाहिए थी इतने रेट को तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? We calculate that by looking, for example, at a patient's gender and age. Agar someone is 40 years of age, so what you do is you take 220 minus 40, so 180 is the target heart rate. अगर उसका 85% अचीव कर लेता है तो वो टेस्ट एडिक्वेट इनफ, ठीक है। तो लेट्स से कि वी आर सेइंग कि 180 रेट था जो उसका टारगेट था और हम इसका 85% अचीव करना चाह रहे हैं, तो वी नीड टू टेक हाउ मच, 24 आउट ऑफ इट 156। तो अगर 40 ईयर्स का बंदा 156 हार्ट रेट अचीव कर लेता है, ईसीजी पे चेंजेस नहीं आती, तो दैट्स सिमिलर टू डूइंग एन ईसीजी। अब टू अचीव दैट विद वेंटुलिन टैबलेट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, लेकिन अब हॉस्पिटल में क्या साइकिल चलवाए, साइकिल चलवा सकते हैं आप, उस वक्त ईसीजी कर लें, जिसे ईटीटी कहते हैं। ईटीटी में या आप जो भगा लेते हैं साइकिल चला देते हैं, या आप ग्लूटामिन स्ट्रेस एको करते हैं। ये सारी चीजें हॉस्पिटल में हो रही है। वो वहाँ की जीपी शिप में नहीं ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आई डोंट थिंक उसका कोई बेनिफिट। ये हमने ट्रोपोनिन की बात की तो मस्कुलर डैमेज में ये बढ़ती है। हाँ, तो ये स्ट्रेच में भी बढ़नी चाहिए नॉर्मली। अच्छा देखिए, जो ट्रोपोनिन है ना, एसेंशियली जहाँ कहीं भी है ये कार्डिक स्पेसिफिक, दैट इज व्हाई वी प्रेफर इट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। 2-3 चीजों का तो बेसिक उसमें वन शिफ्ट करते हैं। कार्डिक स्पेसिफिक भी है, इवन जब सीकेडी में बढ़ रही होती है तो ओरिजिन स्टिल द हार्ट, ठीक है। जब भी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। नेक्रोसिस, माइक्रोस्कोपिक नेक्रोसिस तो हो रहा है ना कहीं पे, इवन स्ट्रेच के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज कर, माइल्ड राइज इज वेरी कॉमन, लार्जर राइज इज व्हाट वी एक्चुअली केयर अबाउट। और इट समटाइम्स कैन बिकम अ प्रॉब्लम कि जब प्रोपोनेंट पॉजिटिव, हार्ट हॉस्पिटल में बड़ा कॉमन है कि जो प्रोपोनेंट पेशेंट का पॉजिटिव आ गया, अब एमआई का डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस एमआई रिक्वायर्स अ पॉजिटिव प्रोपोनेंट प्लस वन ऑफ द फ्यू,
वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, चेस्ट पेन की हिस्ट्री हो, ईसीजी हुई हो जिसके ऊपर नई चेंजेस हों, कोई नए परफ्यूजन डिफेक्ट हों, पैथोलॉजिकल हों। अब अक्सर पेशेंट जो हार्ट फेलियर के होते हैं वो एमआई का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होते, पॉजिटिव प्रोपोनेंट होता है। इन लोगों को मायोकार्डियल इंजरी कह दिया जाता है, इनको कहते हैं इनको मायोकार्डियल एमआई नहीं हुआ, इनको मायोकार्डियल इंजरी हुई है, यानी इंजर जरूर हुआ है लेकिन वो एमआई वाला नेक्रोसिस नहीं हुआ। तो पॉजिटिव प्रोपोनेंट विदाउट सिम्टम्स, विदाउट एनी अदर कोरिस्पॉन्डिंग थिंग does not indicate a MI as such। लेकिन जितना बड़ा लार्ज है सर, मेरा क्वेश्चन ये ऐसे पेशेंट्स के लिए था कि जहाँ पे है तो इसका मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप वेंटोलिन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसे पेशेंट के ट्रोपोनिन पॉजिटिव हैं वो तो बाय डेफिनेशन अनस्टेबल डिजीज है। अनस्टेबल डिजीज को प्रोवोक नहीं करते, अनस्टेबल डिजीज को रेस्ट करवाते हैं। यानी फर्ज कर लें बाय डेफिनेशन अगर किसी को अनस्टेबल इंजाइना है तो आप उसको ईटीटी पे चाहते नहीं है उठे, इसलिए कि आपको पता है कि डिजीज को वर्सन हो रहा है, इस्कीमिया को प्रोवोक करना है। प्रोवोक तो वहाँ करवाना है जहाँ डायग्नोसिस लगे कि कमी। अच्छा, ये सिर्फ हार्ट के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी की भी सारी कहानी इसी तरह, जहाँ आपको लगता है किसी की डेफिशिएंसी, आप उसको प्रोवोक करके देखना चाहते हैं कि आ तो नहीं रहा, क्या हो तो नहीं रहा, ठीक है। एंड वो एक डिफरेंट बात है। एंड जो ईटीटी के अंदर आप प्रोवोक इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि आपको डाउट होता है कि क्या इसको जो सिम्टम हो रहे हैं वो हार्ट के हैं या नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में डिजीज स्टेबल है, कोई अनस्टेबल डिजीज नहीं है। ऑल यू वांट टू सी कि जो 4 किलोमीटर पे सिम्टम हो रहे हैं, मैं जरा ईटीटी पे हार्ट रेट बढ़ा के देखता हूँ उसमें कि ईसीजी शो कर रही है नहीं कर रही, और वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। इस्कीमिया कैस्केड के सिम्टम बाद में आते हैं, इस्कीमिया चेंज कर जाती है। एनीवेज, अच्छा ब्रीफली ट्रीटमेंट में जी रिहेबिलिटेशन को फिलहाल छोड़ दें, फार्माकोलॉजिकल पे हम कंसंट्रेट थोड़ा सा कर लेते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल को भी फिलहाल छोड़ दें क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मोस्ट ऑफ इट वी आर गोइंग टू से इज बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस। 2021 की ESC गाइडलाइंस हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर की। वी आर गोइंग टू लुक जस्ट एट क्रॉनिक हार्ट फेलियर। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, द फर्स्ट स्टेप इज टू सी कि हम देख किसको रहे हैं, क्या ये रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, माइल्डली रिड्यूस्ड है, या जिसको मिड रेंज कहा जाता था, या प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो ये तीनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इनफैक्ट ट्रीटमेंट प्राइमरीली है ही हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन की। अच्छा, अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह की ट्रीटमेंट हैं। एक है जो डिजीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है। दूसरा बड़ा इशू है हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी कॉमन है। अभी आज मैंने एक पेशेंट जिसको डिस्चार्ज किया 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रह के गई है और 3 महीने में 4 महीने में 3 दफ़ा एडमिट हुई है, ठीक है। ये है बर्डन हार्ट फेलियर का हम पे और पेशेंट्स पे हमसे ज़्यादा और कम्युनिटी पे। तो हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉब्लम है वो रोकना चाहिए, सिम्टम्स इम्प्रूव होने चाहिए और मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए। तो 2 तरह की ट्रीटमेंट के एम होते हैं। वन इज टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सेकंड इज प्रोग्नोस्टिक कि मोर्टेलिटी इंप्रूव करें उनकी। जो पहली कैटेगरी है उसमें डायूरेटिक्स हैं, डिजॉक्सिन है, वेजोडाइलेटर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। प्योरली सिम्टोमेटिक है, प्योरली टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन है। डिस्पाइट lots of people including me believing that furosemide has a very important role, for now they are mainly for symptoms and reducing hospitalization. अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिजॉक्सिन के बारे में मेंशन कर दूँ। डिजॉक्सिन हमारे यहाँ बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होती है इन सम सेटअप्स फॉर पीपल विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। मेरा ख्याल है इट स्टेम्स फ्रॉम दिस बेसिक कंसेप्ट कि बुक्स के अंदर लिखा है कि इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। अब वो है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन फ्रॉम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू डिजॉक्सिन का फॉर पीपल इन नॉर्मल साइनस रिदम करंट उसमें कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट वन शुड मेक एवरी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस बीटा ब्लॉकर्स, चाहे लोएस्ट पॉसिबल डोज पे हो, चाहे रिपीटेड अटेम्प्ट करनी पड़े। और आई फाइंड डिजॉक्सिन मोर अ पिल बर्डन देन एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। आज 20 साल पहले ठीक था। अब जब हमारे पास मल्टीपल डायूरेटिक्स हैं, एटलीस्ट 2 रेट रिड्यूसिंग मेडिकेशंस हैं जो हेल्प कर सकती हैं। वन बीटा ब्लॉकर, सेकंड आइवेब्राडीन। रोल ऑफ डिजॉक्सिन इन नॉर्मल साइनस रिदम फॉर द टाइम बीइंग नहीं। बीटा ब्लॉकर में जो वो मैं भी मेंशन कर इन टर्म्स ऑफ सिम्टोमेटिक हो सकता। हाँ, देखिए एस्पिरिन वगैरह तो अंडरलाइन कंडीशन ये बिल्कुल हो सकती है। देखिए एस्पिरिन है, स्टैटिन्स हैं, वो अंडरलाइन कंडीशन जो उसको आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है, उसको हाइपरटेंसिव डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है फॉर एग्जांपल, उसके लिए एस्पिरिन का कोई रोल नहीं। वी नो कि एस्पिरिन प्राइमरी प्रिवेंशन में अनलेस कि उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज प्राइमरी प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है।
इट साउंड वेरी गुड कि हम एस्पिरिन देंगे पेशेंट को लेटर ऑन हार्ट अटैक नहीं होगा। 2018 की तीनों स्टडीज इंक्लूडिंग ओल्डर डायबिटिक की सेट के अनफॉर्चुनेटली है नहीं ऐसा। इट साउंडेड वेरी गुड लेकिन फॉर नाउ फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। तो डायबिटिक्स में पहले रूटीन में दी जाती है, क्योंकि एक कंसेप्ट ये था कि डायबिटिक्स बट टेकन एज इक्विवेलेंट टू पीपल ऑलरेडी नोन टू हैव इस्केमिक हार्ट डिजीज। कहा जाता था कि डायबिटीज हो गई है तो समझ लें अब वही रिस्क है जो इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गई है तो वो भी। लेकिन 2018 एक्चुअली चेंज ऑल दैट, उसके बाद गाइडलाइंस भी चेंज हुई एंड इट्स अ टॉपिक फॉर डिस्कशन कि किसको एस्पिरिन देनी है किसको एस्पिरिन नहीं देनी है। बट फॉर द मोस्ट पीपल नंबर नीडेड टू ट्रीट टू प्रिवेंट वन cardiovascular event, जिसमें CVA भी इंक्लूडेड है, is above 300। ये 300 को दें तो एक में कम होगा। Number needed to cause one GI bleed is around 220 or 230. I don't remember. यानी you will end up causing more GI bleeds than preventing events. अच्छा, that does not mean कि we should not give statins. It doesn't mean कि 120 to 130 regardless, मैं मेरा तो अपना पर्सनल बिलीव है, regardless of age, 120 to 130 ब्लड प्रेशर पिल बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन कम्युनिटी लेवल साल्ट इंटेक खत्म करवा दें, कम करवा दें, साल्ट सप्लीमेंट्स और साल्ट फ्लूइड इंटेक भी कम करें उसको। नहीं सर, फ्लूइड का नहीं, फ्लूइड असल में पता है हार्ट फ्लूइड रिटेन करता है बिकॉज इट रिटेन सॉल्ट। ये बॉडी का होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है। इस किस्म के पेशेंट को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड हाउ मच इट कैन बी। अच्छा सच पूछिए किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? हार्ट फेलियर वाले की? हार्ट फेलियर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। आपको कॉमन जो कंसेप्ट हैं वो बात कर लेते हैं। कॉमन कंसेप्ट ये है कि यूजुअली 1.5 लीटर से ऊपर ना जाए। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट बेस्ड ऑन वेरी गुड साइंस। 4 से 6 गिलास दैट्स नॉट बेस्ड ऑन वेरी गुड साइंस, ठीक है। अब हो ये रहा है कि साइंस में पीपल आर क्वेश्चनिंग, जैसे एक पेशेंट को, अच्छा ये जो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को पर्सनली लग रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन वी आस्क दिस, एक पेशेंट को एमआई हुआ 2002 में, उसको एस्पिरिन देनी शुरू की, 2022 में वो आके कहता है कि मैंने एस्पिरिन छोड़ दी, डॉक्टर कहता है बड़ा गलत किया। बट इज इट रियली ट्रू कि गलत किया? डू वी हैव एनी एविडेंस कि बियॉन्ड 10 ईयर्स एस्पिरिन का वाकई कुछ प्रूवन रोल है? हम पेशेंट को कहते हैं कि जी बाईपास करवाना, सम ऑफ देम डू नॉट गेट अ बाईपास। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है कि रिक्शों के पीछे लिखा था, मैं हर एक को कह रहा था, रिक्शों के पीछे लिखा था दिल के महंगे बाईपास की बजाय ये करवाएं। People now have doubts, there is a mistrust because we have not been able to explain to them कि रिस्क रेशियोज की बात हो रही है, कोई गारंटीज की बात उसमें नहीं हो रही। ये जो मैं एविडेंस बेस की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि वी हैव टेकन एज अ गॉस्पेल, एज अ कि जी बस 1.5 लीटर से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। बट फैक्ट इज के जो बेसिक एविडेंस है दैट्स एक्चुअली ओनली फॉर पीपल के जिनको हाइपोनेट्रीमिया है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, उसमें सारा कुछ होता है। तो 1.5 लीटर जो है हमारी उसको डिपेंड करेंगे कि 6 गिलास के लिए 24 आवर में। अच्छा, दो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक डिस्कस हो रहा है वो पेशेंट जो अभी क्लिनिकली वॉल्यूम ओवरलोडेड है, एक है मेंटेनेंस के लिए किसको फ्लूइड देना है। दोनों में जो प्रूवन बेनिफिट है, पहले वाले में जो प्रूवन बेनिफिट है वो तो उनमें है जिनको हाइपोनेट्रीमिया हो, जिनमें नहीं है, जिन्हें नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड ने करना है, जो आपके डायूरेटिक्स ने करना है, वो करना ही है, एक्सेस फ्लूइड को डायूरीज करते रहना है। दूसरी बात ये है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर डू नॉट ओवर ड्रिंक, मेजॉरिटी पीपल डू नॉट ओवर ड्रिंक। ये बात ठीक है कि हॉस्पिटल कई दफ़ा उन्हें लिमिट कर देते हैं 700 ml, लेकिन आई ऑनेस्टली बिलीव कि एक पेशेंट के हार्ट फेलियर के सिम्टम्स इम्प्रूव होने में व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज कि मेरी डायूरेटिक की डोज और क्या थी, पेशेंट की कंप्लाइंस डायूरेटिक साथ क्या थी, और उसका रिस्पांस, डायूरेटिक रेजिस्टेंस तो नहीं थी CKD है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि आज इसने एक एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी पी लिया इसलिए ये डायूरीज नहीं हो सकता। तो सिंपल आंसर है 1.5 लीटर पानी, ठीक है। अच्छा बीटा ब्लॉकर में भी सेलेक्टिविटी बताएं उसके कौन से हम यूज करें। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं लेस से। अब आगे भी फॉर द ट्रीटमेंट मोडिफायर्स, ठीक है। तो 2 बेसिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म हार्ट फेलियर जो फेल होना शुरू होता है, 2 चीज़ें होती हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं वो हार्ट रेट और सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बीटा ब्लॉकर्स आइवेब्राडीन है। जो रास एक्टिवेशन को डील कर रही है वो AC इनहिबिटर, ARB, ARNI, MRA
और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इसको छोड़ दें। अच्छा, मैनेजमेंट इन लोगों की क्या है? 4 ड्रग्स हैं जो प्राइमरीली आपने रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का कंसीडर करनी होती है। कितने से होगी? लेस देन 40, लेस देन 40%, अबव 50, और दरमियान की जो मिड रेंज कहते हैं या माइल्डली रिड्यूस कहते हैं, माइल्डली। और एडुकेट क्या होगी? अबव 50 को समझ प्रिजर्व है, वैसे हम लोग तो अबव 55 रिपोर्ट उसी को भी प्रिजर्व कहेंगे। हाँ, ये तो प्रिजर्व है, ये एडिक्वेट है, आपसे एडिक्वेट कह लीजिए। अच्छा, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में जाने की वजह से ये याद रखिए कि जो ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की है, एसेंशियली वही माइल्डली रिड्यूस की है। फर्क सिर्फ ये है कि गाइडलाइंस में एविडेंस कम है, क्लिनिकल एविडेंस कम है। ट्रीटमेंट एसेंशियली ईयर 50% से कम हो तो मोर और लेस एक जैसी ही। एविडेंस का फर्क है कि क्लास 1 करना है या क्लास 2D करना है। नीचे वाले को भूल जाएं, वो हमारे लिए मोस्टली इम्प्लीकेबल नहीं है। इफ समवन वांट्स टू रीड इनटू इट, वेरी गुड, ऑब्वियसली lots of people need ICDs and CRTs. 4 ड्रग्स हैं, एस या आर्नी, बीटा ब्लॉकर, MRA और डिफेग्लिफ्लोजन या इम्पेग्लिफ्लोजन फॉर पीपल विद रिड्यूस्ड EF। अब कौन सी ड्रग शुरू करनी है, किस तरह शुरू करनी है? AC इनहिबिटर में प्राइमरीली 3 है which I tend to prefer. Enalapril has a good evidence as well, but I tend to go for one of the two. Either I'll go for Ramipril or I'll go for Perindopril. तो 2.5 शुरू करवाएं, BTT का अगली दफ़ा 5 के बाद अगली दफ़ा 7.5, 10, 4 स्टेप, 10 मिलीग्राम टारगेट डोज है। पेरिडोप्रिल 2, 4, 8, 2 करवाएं, 4 करवाएं, 6 ज़रूरी नहीं है, 8 पे चले जाएं। पेरिडोप्रिल आई बिलीव कि पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है, नहीं मैं सारा ट्राई 6 मिलीग्राम तो नहीं पता, हाँ 248, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है पेरिडोप्रिल, आई डोंट, तो मैं तो रेमिप्रिल ही यूज़ करता हूँ। बीटा ब्लॉकर, 3 बीटा ब्लॉकर हैं जो प्राइमरीली हार्ट फेलियर के लिए लाइसेंस हैं, वो हैं बाइसोप्रोलोल, कार्वेडोलोल और मेटोप्रोलोल। अब उस पर एक अलग डिबेट है कि मेटोप्रोलोल की जो प्रेपरेशन ट्रायल के अंदर यूज हुई थी मेडिटेशन में, वो लॉन्गर एक्टिंग थी। हमारे पास मिरोल वगैरह जो है वो शॉर्टर एक्टिंग है। तो वन ऑफ द टू, आइदर गो फॉर बाइसोप्रोलोल और गो फॉर कार्वेडोलोल। बाइसोप्रोलोल का बेनिफिट है वंस अ डे ही पड़ती है, कार्वेडोलोल ट्वाइस अ डे, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करें तो कार्वेडोलोल मे वेल बी अ बेटर बीटा ब्लॉकर। स्टार्ट लो, इनफैक्ट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब उनको बीटा ब्लॉकर शुरू करवाते हैं वो कहते हैं हम फटीग हो गए, हमसे काम ही नहीं हो रहा, ये क्या शुरू करवा दिया, एंड दे स्टॉप, परसिस्ट विद इट। MRA 2 हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरिनोन। पोस्ट MI में एप्लेरिनोन कुड बी प्रेफर्ड, ऑल्दो बिट मोर एक्सपेंसिव, और बाकी में स्पाइरोनोलेक्टोन 25 पे शुरू करवाएं। पर्सनली व्हाट आई टेंड टू डू इज AC इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, और अगर पेशेंट का BP अलाउ करता है तो स्पाइरोनोलेक्टोन 25 एट दैट पॉइंट। इसका इफेक्ट 4-6 दिन के बाद हम, अच्छा, और एट सम पॉइंट नेक्स्ट आई कीप स्पाइरोनोलेक्टोन एट 25, आई डोंट इंक्रीज स्पाइरोनोलेक्टोन टू 50। In fact, I then increase AC inhibitor and then beta blocker. तो ACE, beta blocker, MRA तीनों इकट्ठे शुरू करवा दें, उसके बाद ACE को बढ़ाते जाएं, फिर नेक्स्ट 2 वीक के बाद बीटा ब्लॉकर को बढ़ाते जाएं, and try to achieve the target dose. Target dose achieve करना ज़रूरी है, even in people who are currently mildly symptomatic or even asymptomatic. तो just because उसे कहता है जब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ, does not mean कि we leave them on 1.25 milligram of bisoprolol. Target dose achieve करना, अदर देन JVP अगर एक AC इनहिबिटर में कॉमनली हम देखते हैं कफ का इंसिडेंस का या हमारी पॉपुलेशन, उस वक्त फिर क्या ARP पे आप चले जाती हैं? अच्छा सर, पता है जो कफ है ना, हैज बीन ओवर रिपोर्टेड, ओवर एग्जैजरेटेड, हो ये रहा है प्रैक्टिकली। एज सून एज अ पर्सन रिपोर्ट्स कफ, इंक्लूडिंग हम लोगों को, अगर पेशेंट खुद कह रहा था कि ये दवाई की वजह से, तो यू से कि जी हम AC इनहिबिटर को विड्रॉ कर देंगे। ARB are a second choice, in fact a distant second choice. में तो हम लोग हाँ, बड़े preferable। For heart failure, the evidence is actually mainly for AC inhibitor, जो stronger है। ब्रैडिकार्डिया का एज नहीं है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज में वो एक्टिवेट ब्रैडिकाइनिन वाला, ब्रैडिकार्डिन रिलीज होगा तो वो एंजाइना जो रेडिएशन की काज करेगा, वो AC इनहिबिटर की कफ की बात करें। अच्छा, तो practically all I will suggest is one of the two. एक तो ये कि वी नीड टू इंश्योर कि जो कॉमन कॉजेज कफ की वो नहीं हुई, तो वायरल नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स नहीं है, रिड्यूस द डोज एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ वीक्स, इफ इट परसिस्ट देन टेक इट ऑफ। उसमें हमने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं वो बेचारे महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से कफ कर रहे हैं,
यूं ही उनका एसी इनहिबिटर बंद किया और बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक है कि ये वो सफर बहुत करते हैं, नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये और बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप इफ यू आर श्योर कि एसी इनहिबिटर का है। बहुत सी केसेस में हमने देखा है कि वो काफी, कोई कहता है जी मैं 6 महीने से, कोई साल से सारी रात तक सोता नहीं, उनके एसी इनहिबिटर पता करें मेरा होता है, वो बात करें तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो आपने एस्टेब्लिश कर लिया कि एसी इनहिबिटर ही है, आपको जाहिर एसी इनहिबिटर हटाना है और देन यू रिप्लेस विद एआरबी। लेकिन ये कि एसी इनहिबिटर पर्सनली बट आई टेंड टू सजेस्ट इज के हार्ट फेलियर में जो जंप है ना एसी इनहिबिटर से एआरबी, दैट शुड नॉट बी एज क्विक एज इट हैपेंस इन हाइपरटेंशन। अच्छा, आर्नी सेक्यूब्यूटर वेल्सार्टन है, स्टार्टिंग डोज 24-26, आज जो वेलबेट है वो भी जाहिर है आर्नी है। स्टार्टिंग डोज है 24-26, या अगर बिल्कुल स्टेबल हो तो 50 मिलीग्राम बीडी, और टारगेट डोज है 100 मिलीग्राम बीडी। अच्छा, एक टिपिकल प्रेजेंटेशन एक पेशेंट जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज कार्डियोमायोपैथी की है, अगर वो इस्टेब्लिश होगी तो इस तरह की होगी, उसमें एंटीप्लेटलेट होगा, एक स्टैटिन होगा, एक आर्नी होगा, बाइसोप्रोलोल होगी, स्पाइरोमाइड होगी जिसमें स्पाइरोलेक्टोन है, और इम्पेग्लिफ्लोजन होगी। तो ये चारों क्लासेस जो है वो उसमें कवर हो रही हैं। अच्छा, SGLT2 इनहिबिटर को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्टार्ट लो और कुड गो स्लो बट कीप गोइंग, ऑप्टिमाइज करते रहें। इनफैक्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कंट्राइंडिकेशन एस, आरपी, एआरबी, आर्नी और एमआरए की हाइपरकैलेमिया है, क्रिएटिनिन नहीं है। क्रिएटिनिन लेस देन 2 एक्सेप्टेबल है कि क्लोज मॉनिटरिंग का शुरू करवा दें। और हाइपोटेंशन कॉमन साइड इफेक्ट है, सो मेक सम स्पेस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज अननेसेसरी वेज़ोडाइलेटर ना दें, कि नाइट्रेट का मिनिमल इफेक्ट अगर से होता है, लेकिन देयर इज नो नीड उस पेशेंट को नॉर्वेस्ट दी जाए, या उस पेशेंट को वी वुड मच प्रेफर कि नॉर्वेस्ट रुकवा दें या एस बढ़ाना शुरू कर दें, इन स्पेस बनाए ताकि उसको ब्लड प्रेशर की जो स्पेस है वो कवर कर ले। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स। और लास्ट एक, टेक्स टाइम एंड एफर्ट टू अचीव अ डोज, सो डोंट अंडरमाइन इट। ये मैसेज है मे बी सबके लिए कि इट्स वेरी फ्रीक्वेंट कि पेशेंट एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक पे आता है तो ड्रग्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और एक अगर किसी ने फर्ज करें एफर्ट करके ड्रग अचीव की होगी, डोज उसकी स्ट्रेंथ, तो सिर्फ इसलिए कि वो चूँकि प्रिस्क्रिप्शन चेंज होना है तो वी गो वन स्टेप बैकवर्ड। अगर एफर्ट करके कोई डोज बढ़ी है तो कीप एट दैट डोज, डोंट ट्राई टू चेंज इट फॉर दैट रीजन। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो था वो आर्नीज के मुतालिक था। बेसिकली आर्नी का जो फर्स्ट मेजर ट्रायल था वो पैराडाइम HF था, जस्ट बेस्ड ऑन वन। ये होता बड़ा कम है, लेकिन ये पैराडाइम HF का डाटा इतना अच्छा था कि बेस्ड ऑन दैट वन एलोन उन्होंने गाइडलाइंस चेंज हो गए। एसेंशियली एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था कि BP 100 से कम ना हो, EGFR लेस देन 30 ना हो, हाइपरकैलेमिया ना हो, और अगेन दिस इज अबाउट पैराडाइम HF। NYHA क्लास 2 to 4 में थे, EF लेस देन 40% था, बाद में 35% कर दिया। एक्सक्लूजन वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। आउटकम, प्राइमरी आउटकम थी एंड पॉइंट था कार्डियोवास्कुलर डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर, जो हमारे बेसिक दो इशू थे। और रिलेटिवली 13.3% और 12.8% रिडक्शन थी, जो सिग्निफिकेंट प्राइमरी कंपोजिट आउटकम रिड्यूस हुई थी। हैज़र्ड रेशियो वाज 0.8 फॉर पीपल हु हैड सेक्यूब्यूटर वेल्सार्टन। इस सब को बस जस्ट बिलीव दैट इट वर्क्स ऑन मोस्ट फ्रंट्स। अच्छा, इट वाज अप्रूव्ड, वो कहते हैं जी US के अंदर और यूरोपियन यूनियन में 2015 में। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर है, आर्नी एम्बुलेटरी पेशेंट्स में जो ACE इनहिबिटर ले रहे हैं और स्टिल सिम्प्टोमेटिक हो, एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ACE इनहिबिटर इज क्लास 1 इंडिकेशन। इन ACE इनहिबिटर नाइव पेशेंट, यानी क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम शुरू ही क्यों ना करवाएं आर्नी, और फैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यही होता है कि आप शुरू ही आर्नी करवा रहे हो, क्योंकि डेटा कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग, तो इट मे बी कंसिडर्ड फॉर द टाइम बीइंग। गाइडलाइंस ACE में इट्स अ क्लास 2B, लेकिन वेलबेट है इनके पास, जो आपके स्पॉन्सर है, इस और किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ वेलबेट का नाम लेते हैं। ये बात पोस्टर पर है। तो लेकिन अगर पिछले 8-10 साल में कार्डियोलॉजी में जो दो मेजर फार्माकोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं, उनमें एक आर्नी है, एक ये SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इम्पेग्लिफ्लोजन और डिपेग्लिफ्लोजन। अच्छा,
फिर ये कि इसका इन हॉस्पिटल एविडेंस भी स्टार्ट का था वो वॉश आउट। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप ACE इनहिबिटर रोक के आर्नी शुरू करवा रहे हैं तो 36 आवर्स का पीरियड दरमियान में आपको देना है टू रिड्यूस एंजियोडेमा। प्रैक्टिकली होता है कि अगर आपने ACE इनहिबिटर रुकवा रहे हैं और आर्नी शुरू करवा रहे हैं क्योंकि पेशेंट अभी भी सिम्प्टोमेटिक है, तो बेसिकली लीव इट फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि 2 दिन के बाद ये शुरू करें। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? हाइपरकैलेमिया, एंजियोडेमा, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और EGFR लेस देन 30। स्टार्ट लो, मे गो स्लो, 24-26 यानी 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे स्टार्टिंग डोज है। 2 वीकली इंटरवल्स पे बढ़ा लें। क्रिएटिनिन एंड पोटाशियम मॉनिटर करते रहें। प्रैक्टिकली पर्सनली बताया वो सजेस्ट है अगर क्रिएटिनिन 2 से ऊपर है तो कम्युनिटी में ना शुरू करवाएं, एटलीस्ट नेफ्रोलॉजी वालों से कंसल्ट करें, बिकॉज इट विल लुक बैड अगर कोई और इशू होता है। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड थैंकफुली होंगे, इसके ऊपर जो है वो सिर्फ एक पॉइंट है इस स्लाइड के अंदर, हालांकि बड़ी बिजी स्लाइड है। ये स्लाइड बता ये रही है कि जो आजकल की ट्रीटमेंट्स हैं उनका नंबर नीडेड टू ट्रीट टू रिड्यूस ऑल काज मॉर्टेलिटी एट 5 ईयर्स, यानी कितने पेशेंट्स को आप ट्रीट करें 5 साल के लिए तो आप एक डेथ जो है वो रिड्यूस करवाएंगे एक ड्रग देने के लिए। इसके लिए आपने करना चाहिए सिर्फ लेफ्ट वाला लेफ्ट मोस्ट में देख लें और राइट मोस्ट में देख लें, दरम्यान वाले सारे को इग्नोर कर लें। तो वी सी के ACE इनहिबिटर के लिए 18 है, ARB के लिए 24 है, एंड देन इफ वी कम डाउन फॉर आर्नी दैट्स 11। ठीक है, तो आर्नी के लिए 11 है, ACE इनहिबिटर के लिए 18 है, ARB के लिए 24 है, यानी आप 11 पेशेंट को देख तो आप उसको बेनिफिट आपको नजर आ रहा है। पैराडाइम HF में इनहेलाप्रिल के अगेंस्ट 21 था, यानी अगर आप ACE इनहिबिटर से दें तो उसकी सुपीरियरिटी क्या है। अच्छा, ये स्लाइड दिखाने का पर्पस क्या था? एक तो ये कि इसमें अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे अच्छा तो नंबर नीडेड टू ट्रीट आ रहा है बीटा ब्लॉकर का, जो सबसे कम यूज हो रहे होते हैं। दूसरा MRA का, तीसरा हमारे लिए आर्मी का। अच्छा, जो पॉइंट मैं असल में इसमें करना चाहता था वो ये करना चाहता था कि हमारे पास इत्तेफाक में पेशेंट हर क्लास का आ रहा होता है, और आई सीन कि जब आप पेशेंट्स को कहते हैं ना कि ड्रग है थोड़ी सी महंगी है आप ले लेंगे, आर्नी बताते हो कि आर्नी थोड़ी सी महंगी है ACE इनहिबिटर की निस्बत, तो सम ऑफ देम गेट वेरी डिसअपॉइंटेड। और कोई एक रिलेटिव उठ के कहेगा कि नहीं 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 जी सेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं, आप लिख लें। एंड यू फील कि यार ये लोग अपने आप को शायद पता नहीं कितने कंप्रोमाइज़ करके आर्नी खरीदेंगे यहाँ पे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, जो आई ट्राई टू कन्वे टू देम कि कीमत में शायद 2 से 10 का फ़र्क हो, या 1 से 10 का फ़र्क हो, 3 से 10 का फ़र्क हो, काम करने में इसमें और ACE इनहिबिटर में 12, 7 और 10 का फ़र्क ही है। ऐसा नहीं है कि वी हैव टू फोर्स पीपल विद सीवियरली इम्पेयर्ड LVs कि जी बस चाहे जायदाद बेच दें, लेनी आपने आर्नी है क्योंकि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस हमारी जैसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे फ्रॉम पॉकेट हो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है, लेकिन दैट्स एक्चुअली द नीड ऑफ द टाइम। वी नीड टू नो कि एक इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, एक स्टैटिन अगर हायर डोज पे दे रहे हैं, वो आर वी एक्चुअली गोइंग टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन। यानी आर्नी का मेजर एडवांटेज जो कॉस्ट यूटिलिटी में कहते हैं वो है भी यही कि रिड्यूसेस हॉस्पिटलाइजेशन बाय अबाउट आई बिलीव 16% और 20%, और चूँकि वो कर देता है तो कॉस्ट को वहाँ से ऑफसेट कर देता है। लेकिन आई एम ट्राइंग टू से इज के ऑल दीज आर गुड ड्रग्स। अगर आप इनमें से किसी पे पेशेंट को ऑप्टिमल डोजेस, टारगेट डोजेस तक ले जाते हैं, और मेन इशू बनता है हाइपोटेंशन, मेन इशू बनता है रीनल फेलियर, हाइपरकैलेमिया, लेकिन अगर आप उनको ले जाते हैं डोजेस के ऊपर तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू गिव देम, यू हैव डन देम अ मेजर सर्विस। ठीक है सर, तो यही है जो अच्छा लास्ट एक दो स्लाइड। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, एग्जैक्टली यही ड्रग्स हैं, लेस सर्टेनिटी है, लेस एम्फेसिस है, क्योंकि ट्रायल एविडेंस असल में मोर देन 40 का था। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कोई ट्रीटमेंट है हार्ट फेलियर डायबिटीज़ की। SGLT2 इनहिबिटर जिनको दिए जा सकते हैं, जिनको डायस्ट्रिक डिस्फंक्शन हो, उनमें जो लास्ट ESC की उसमें प्रेजेंटेशन भी थी, SGLT2 इनहिबिटर दे सकते हैं। और आई डू बिलीव कि पॉसिबली वो एक ट्रायल आया था टॉप कैट, कंट्रोवर्सी, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वहाँ पे थी, लेकिन पॉसिबली स्पाइरोनोलेक्टोन में है सम बेनिफिट्स। तो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इनका मेन रोल है वहाँ पे। बाकी हाइपरटेंशन ट्रीट करें, एरिथमिया ट्रीट करें, डायबिटीज ट्रीट करें, डायूरेटिक्स दें, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड है तो पहले वाली ट्रीटमेंट का कोई रोल फिलहाल प्रूवन नहीं है।
इसको यू ऑल नो दिस व्हेन टू सी स्पेशलिस्ट एडवाइस जब मायोकार्डियल फेलियर नहीं है, जब वेलुलर हार्ट डिजीजेज है कि कहीं सर्जिकल कुछ तो नहीं करना, इनिशियल एवेल्युएशन में भी एको वगैरह करवानी पड़े, प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स में ऑप्शन लिमिट, CKD में एस नहीं दे सकते, ARB नहीं कई दफ़ा दे सकते, तो हाइड्रोलाइसिस नाइट्रेट दे सकते हैं। वर्सनिंग हार्ट फेलियर बार बार डिटेरियोरेट हो रहा है पेशेंट, ब्रेडिकार्डिया है, इस तरह की इशूज हैं। तो लास्ट स्लाइड ये है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी की एस्पेक्ट है एनी क्लिनिकल डायग्नोसिस, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। मिड रेंज को उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह रिड्यूस रेंज है, और प्रिजर्व के अंदर SGLT2 डायूरेटिक्स और अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करें, और बिल्डिंग अप अ डोज टेक्स एफर्ट एंड टाइम, सो कीप गोइंग। थैंक यू जी। Thank you very much, Dr. Muzaffar. You have explained it very efficient.